Hello and welcome to Study with Sudhir. This is your own digital classroom. This is an important video and I want all students of class 11 and class 12 to stay connected with SWS because this video is going to tell about the battle for CUET. Many of you do not take CUET very seriously. आप में से कई लोग CUET को ज़्यादा seriously नहीं लेते हैं, लेकिन I must tell you in terms of statistics, in terms of registrations this year for 2023, has seen an increase of 4 lakh more students registering for CUET as compared to 2022, which means, which is at, I think there are about 13 to 14 lakh students who are going to take the examination for CUET this year, which means the demand is more. And in terms of states, Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, Kerala, Tamil Nadu, these are some of the states from where there are a large number of students who are taking the CUET examination. So what is the purpose of this particular video? This particular video is essentially to tell you how to deal with the English language paper, because that's a compulsory paper. All students, irrespective of कौन से domain में आप लिख रहे हैं, you have to still take this English domain examination unless you opt for Hindi as your language, right? So this is basically to tell you किन किन चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, and also to tell you that practice is what is going to make you perfect. And even if you have just given the 12th class examination this year in 2023, आप तो CUET लिखेंगे ही, लेकिन what the new 12th class जो कि 2024 का बैच है या 2025 का जो बैच है जो कि अभी 11th क्लास में गया है, आपको भी CUET के लिए एवरी और इफ नॉट एवरी डे रेगुलरली तैयारी करते रहना चाहिए, ताकि एक एज फार एज इंग्लिश एंड योर डोमेन सब्जेक्ट तो आप 11th और 12th में पढ़ेंगे, राइट? लेकिन जहां तक इंग्लिश का सवाल है, अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो एक तरह से ये निपट जाएगा, राइट? एंड दैट इज व्हाट आई वुड रियली वांट यू टू डू, बिकॉज दिस लैंग्वेज इज समथिंग कंटिन्यूअस, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो या कोई भी दूसरी भाषा हो. तो एक तो एनटीए का जो CUET का वेबसाइट है उसमें जाके आप डिटेल्स दे सकते हैं, लेकिन उसमें से भी मैंने और ब्रेकअप कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वाज द एक्सपीरियंस इन द 2022 एग्जामिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच यू शुड बी प्रिपेयरिंग दिस ईयर एंड इवन द नेक्स्ट ईयर. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहली बात तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. Many of you are familiar with this because this is part of your papers, be it in ICSE or in CBSE. This is the biggest chunk. Okay, और किस तरह के पैसेजेस आते हैं? There can be factual paragraphs जो fact based पैसेजेस हैं, या narrative कोई कहानी हो, या एक literary kind of a passage हो, उसके ऊपर भी आ सकते हैं. ये literacy नहीं होना चाहिए, literary would be a correct word. Okay, so on the basis of this also you can get the passages. दूसरा होता है verbal ability. इसमें ग्रामर की जानकारी होना जरूरी है. You need to know the rules of grammar, especially relating to transformation of sentences, idioms and phrases. Idioms and phrases वगैरह के ऊपर मैं वीडियोस लाने वाला हूं SWS पे. Please make use of that. हमने phrasal verbs में थोड़े डाले हुए हैं. Rearranging the parts, this is another one. कि सेंटेंस डिस्टॉर्टेड होगा, उसमें कौन सा PQRS वाला जो फॉर्मूला है उसमें यू नीड टू रीअरेंज द पार्ट्स. चूजिंग द करेक्ट वर्ड, कि देयर विल बी 4 ऑप्शंस गिवन, सिर्फ सारे MCQ रहेंगे, तो कौन सा वर्ड करेक्ट होगा. अब इसमें आप सोचेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है. चारों ऑप्शंस में से एटलीस्ट 3 ऑप्शंस इतने करीबी होंगे दैट आपको कंफ्यूजन जरूर होगा. ओके, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी. डोंट थिंक इट्स इजी. ओके, synonyms and antonyms, already we are doing videos, there will be more videos coming up. How to improve your vocabulary to get better words. Phrasal verbs के ऊपर हमने already 2 वीडियो डाल दिए हैं. There can be more depending on the response, right? One word substitution, you know, you put a sentence, longish phrase, and उसके ऊपर आएगा कि इस वर्ड को हटा के इन चारों में से one word कौन सा सही होगा उसको यूज कीजिए. उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे. Spelling test, very important. I always say make the dictionary your best friend. Okay, then select the correct sentence. उसमें से 4 में से एक ही सही होगा, तो spotting error किस तरह से करेंगे उसके बारे में प्रश्न आ सकते हैं. Literary devices के ऊपर भी प्रश्न आ सकते हैं, जो poetic devices है, जैसे alliteration हो, metaphor हो, simile हो, paradox हो, oxymoron हो, जो भी आपने
10th 11th 12th वगैरह में पढ़े हैं उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, उसके ऊपर भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। असर्शन एंड रीजन ये सीबीएसई वालों को ज्यादा मालूम होगा, राइट? और उसके साथ साथ कॉज एंड इफेक्ट एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आल्सो। सो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आप पूछेंगे इसकी तैयारी कैसे करें? अगर आप कहते हैं कि ना केवल 2023 बैच के 12th क्लास स्टूडेंट्स बल्कि 2024 और 2025 के 12th क्लास के बैच के स्टूडेंट्स को भी अभी से इंग्लिश की तैयारी कर लेनी चाहिए, ताकि लास्ट मिनट पे वो 2 महीने से में करने से वो इंग्लिश का इंप्रूवमेंट नहीं आता है। देन यू विल लैंड अप ओनली वो थोड़े कम मार्क्स में लैंड करें। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फुल 100%, और इसमें तो 100% स्कोर कर सकते हैं, राइट? सो यू कैन काइंड ऑफ मेक इट ऑलमोस्ट लाइक अ फन एक्सरसाइज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसको बड़ा सीरियसली बुक लेके अरे ये फॉर्मूला है, ये रूल है, पढ़ें। नो, मेक इट अ फन एक्सरसाइज सो दैट एंड दिस विल एक्चुअली हेल्प यू. It's not something only for CUET. This will actually help you even in while you are writing an essay, while you are preparing a poster, while in CBSE, while you are writing a letter, right? While you are writing your answers, while you are doing your comprehension passages in both CBSE and ISC, it will actually help you. So why don't you actually get started right away so that you have a head start over everyone else? मैं रेस में सबसे आगे भाग रहा हूं अभी, स्पेशली जो अभी 10th का एग्जाम दिए हैं, आपके पास अभी समय है. Why don't you make use of the time? Just do half an hour, 45 minutes of just some grammar tests every day. That's all you need to do. So how should you prepare? So the first question is as many practice papers as possible. In fact, and I would say this with a great degree of pride, on the SWS app, you have 51 papers. I'm not talking of some 5-10 papers. I'm talking of 51 test papers, right? Which have been prepared by test book. Please go, and this is for a validity of 1 year. So it's not like, something which will end in 1 month or 2 months. ऐसा नहीं है कि जून के बाद खत्म हो जाएगा. 1 साल की validity है. So you can practice these 51 papers over the next 365 days. You can access it over the next 365 days. So please make use of them. As I said, they are good quality papers. If any of you is also for the present 12th class or for the batch of 2024, अगर आप humanities में हैं, अगर आपका history हो, political science हो, sociology हो, mass media studies हो, geography हो, इस तरह के maths हो, economics हो, उस तरह के subjects हैं, तो उसके लिए there are 414 papers including this 51 papers of English. वो एक अलग पैकेज में है, तो अगर आपको वो लेना है तो उसकी भी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको इसमें then you don't have to buy English. You can actually go for that and you can get access to 414 papers again for a period of 1 year. So what I'm trying to say is that make use of, because they are good quality papers. That's all I'm saying. So you get many more subjects in that. Anyway, the other thing which you need to bear in mind is read more to improve your concentration power, especially when it comes to the comprehension passages, because the comprehension passages, especially factual passages, आपको सारे फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे. ऐसा नहीं है कि आपको 6 बार ही पढ़ो तभी दिमाग में जाता है. नो. सो द मोर कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस यू प्रैक्टिस, द बेटर यू विल गेट एट क्रैकिंग देम. विद जस्ट 2 रीडिंग्स यू विल गेट बेटर एट इट. सो दैट इज समथिंग विच यू कैन डू व्हेन यू रीड फ्रेम क्वेश्चन. नाउ अभी आप अखबार भी पढ़ रहे हैं, आप पेज 4 पढ़ रहे हैं आज के पेपर, अखबार का कोई भी पेपर हो. when you are reading this thing, उसमें से आप you can kind of do an exercise. इसमें से what kind of questions can be asked? You can do the reverse and just make it a fun exercise for yourself. So you are reading, now those are factual based paragraphs, right? और अगर आप कोई book review पढ़ रहे हैं, that will be a bit of a literary kind of a paragraph, right? या आप कोई short story पढ़ रहे हैं, तो that will be like a story narrative kind of a thing. उसमें you can do the twisting and say, okay, इसमें से what kind of questions could have been asked. So the more you do it, और उसमें कोई वर्ड है ना, इसका what can be a synonym, what can be an antonym, या कोई लंबा फ्रेज है, कैन इसका एक वर्ड में इसको मैं सिमटा सकता हूं, कैन आई कंप्रेस दिस इनटू वन वर्ड. Those are the kind of exercises that you do as a fun. I am not at all suggesting कि इसको बड़ा सीरियस पढ़ने के टाइम पे करो. जब भी फ्री टाइम हो, instead of playing some online game or general मटर गश्ती के अलावा, if you just do this and make it as part of your fun time, you will actually do better, because then it will, दिमाग पे कोई बोझ नहीं है, दिमाग पर कोई स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, है ना. That's the best way to study. That will also improve your vocabulary, right?
try to learn new words. Definitely for ISC students, while you're writing your English essays, especially descriptive kind of essays, it will definitely help you if you are able to bring into the essay interesting kind of words, interesting turn of phrase. It will help you in the vocabulary. And finally, grammar rules, especially for transformation of sentences, direct to indirect, direct speech to reported speech, active voice to passive voice, या अगर आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड यूज करने को बोले, स्टार्ट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर देन, राइट? तो उस तरह के इसमें नो सूनर देन का इस्तेमाल होता है उस सेंस में, या हार्डली व्हेन, राइट? सो उस तरह के केसेस में आपको थोड़े रूल्स को याद रखने की जरूरत पड़ेगी. सो नो द बेसिक्स. सो अगर हम इन 5 चीजों को अच्छी तरह से करेंगे, ट्रस्ट मी, as someone who knows the exact funda of cracking English language and literature, I can tell you, you will succeed. You will get a seat in the college of your choice. You will get a seat in the course of your choice. And let me tell you now, I don't believe, one of the reasons why I didn't bring a course, because I didn't think you really need it. But if I'm here to guide you with some interesting videos, so that you are able to improve your English, and this is a continuous process. It's not like, one exam or one paper process. It's a continuous process where you and I can actually learn and study together. Thank you very much for watching. So this was as far as CUET is concerned. The link to the description to get those 51 English or 414 combined humanities papers is there in the description box. Please go and have a look at it, and I'm very sure you will gain from it and you will love it. Okay, thank you very much for watching. Tata, bye bye. Subscribe to the channel.